बेटा ये हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे AKTU 2023-24 का क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे थे। अभी क्वेश्चन जो आपका बी पार्ट है उसका सी सेक्शन में ये क्या कहता है, टेलर सीरीज एक्सपेंड करने के लिए बोल रहा है। 7 मार्क्स में क्वेश्चन है और ये एक्स और वाई में है। तो एक्स और वाई में आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले एक नोट लिख लेंगे। नोट टेलर सीरीज, द टेलर सीरीज of fxy at AB is क्या होती है भाई, f of xy is equal to f of AB plus 1 upon factorial 1 x minus a into factorial 1, right? x minus a into f of x AB plus y minus b into f of y at AB plus next term will be 1 upon factorial 2 x minus a का whole square f 2 time differentiation with respect to x at AB plus 2x minus a y minus b into f x y at AB plus y minus b का whole square f2 time differentiation at of y at AB, ये आपकी बनेगी सेकंड टर्म एंड नंबर थर्ड टर्म विल बी 1 upon factorial 3 x minus a cube f 3 time differentiation with respect to x at AB plus 3 x minus a का whole square y minus b f 2 time differentiation with respect to x and 1 time differentiation at y of fx with respect to y plus 3 time x minus a y minus b f x y y at AB plus x minus y minus b raised to power 3 f 3 time differentiation with respect to y at AB bracket close and so on। इसमें आप लोग क्या करना है, इसमें इन सभी की वैल्यू कैलकुलेट करके फिलअप करनी है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, हल्की सी कैलकुलेशन ज्यादा है। सॉल्यूशन गिवन दैट जो आपको गिवन है उसको लिख लेंगे f of x y is equal to e raised to power x cos of y and about the point 1 and 5/4। चलिए ये जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट में आप लोगों को क्या चाहिए, नंबर फर्स्ट में आप लोगों को क्या चाहिए भाई, नंबर 1 f of x y is equal to e raised to power x cos of y, that is f of this is a and this is b, this implies f1 5/4 is equal to e raised to power into cos of 5/4, what value of pi,
upon 4 of cos x, that is f1 pi upon 4 is equal to e into 1 upon square root 2, that is f1 pi upon 4 is equal to e upon square root of 2. Now नंबर सेकंड आप लोग क्या करना है, नंबर 2 एफ एक्स xy, that is differentiation with respect to x of e raised to power x cos of y. This implies e raised to power x cos of y. Now we find fx1 and pi upon 4, that is e raised to power 1 cos of pi upon 4. This implies fx1 pi upon 4 is equal to e upon under root 2. ये आपका सेकंड टर्म के लिए आ गया। नंबर नेक्स्ट आप लोगों को क्या चाहिए, एंड आप लोगों को क्या चाहिए, एफ ऑफ वाई ऑफ एफ एक्स वाई, इट मीन्स डेल ओवर डेल वाई of e raised to power x cos of y, that is minus e raised to power x sin of y. This implies fy1 into pi upon 4 is equal to negative e raised to power 1 sin of pi upon 4, right? That is e into 1 upon square root 2, that is negative e upon square root of 2. ये आप लोगों के पास सारी वैल्यू जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो आप लोगों ने कैलकुलेट कर ली है, राइट? जैसे कि ये आपको इसकी रिक्वायरमेंट है, इसको आप अपने पास रखिए। नेक्स्ट इसकी भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो इसको भी आप रेक्टेंगल कर दीजिए, और एफ वाई 1 इंटू पाई अपॉन 4 ये भी आप लोगों को रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, तो इसको भी आप रेक्टेंगल कर लीजिए। नेक्स्ट आप लोगों को क्या चाहिए, आपको चाहिए एफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई, it can be written as del over del x into fy xy. What is fy xy? Fy xy is negative. Fy xy is negative. रख लीजिए इसको, that is negative del over del x negative e raised to power x sin of y, that is negative e raised to power x cos of y. Now finding the value at the point AB, this implies fxy at 1 and pi by 4 is equal to e raised to power 1 into cos of pi upon 4. This will be negative e upon square root of 2, that is fxy 1 into pi by 4. Okay, now we can find the differentiation of third वेरिएबल। थर्ड वेरिएबल के लिए आप लोग क्या क्या चाहिएगा, सब कैलकुलेट कर लेंगे। नंबर 3 में आप लोगों को क्या चाहिए, सबसे पहले आपको 3 टाइम डिफरेंशिएशन चाहिए,
f double x xy, that is del over del x, that is del over del x, del over del x into f of x xy, right? यानी कि del over del x fx e raised to power x cos of y, that is e raised to power x cos of y. This implies f2 time differentiation with respect to x at 1 pi upon 4. This implies e raised to power n cos pi upon 4. This also will be f1 pi upon 4 is equal to e upon square root of 2. ये आपका सेकंड डेरिवेटिव आ गया, राइट। नेक्स्ट आपको चाहिए f2 टाइम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y. This will be del over del x into del over del y into fy xy, that is del over del y e raised to power x with negative sign into sine of y. This will be negative e raised to power x cos of y. This implies f2 times differentiation with respect to y1 at 1 pi by 4 negative e raised to power 1 into cos of pi upon 4. This implies f2 time differentiation 1 pi upon 4 is equal to negative e upon square root of 2. ये आपके सेकंड डेरिवेटिव के लिए आपके पार्शियल डिफरेंशिएशन कंप्लीट होगी, राइट। नाउ वी फाइंड द डिफरेंशिएशन फॉर थर्ड टर्म। थर्ड टर्म के लिए आप लोगों को सबसे पहले 3 टाइम डिफरेंशिएशन with respect to x of fxy, that is del over del x, f2 time differentiation of xy e raised to power x cos of y, it will be same e raised to power x cos of y, and this implies f3 time differentiation at 1 pi upon 4, that is e raised to power 1 into cos pi upon 4, that is f3 time differentiation 1 pi upon 4 is equal to e upon square root of 2. ये आपका 3 टाइम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, एंड f3 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ f with respect to y, that is del over del y into f2 time differentiation with respect to y, that is del over del y. 2 टाइम डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, that is 2 टाइम डिफरेंशिएशन negative e raised to power x cos of y, this will be e raised to power x sine of y, and so f3 time differentiation 1 pi by 4 e raised to power 1 into sine pi upon 4, this will be f3 time differentiation 1 pi upon 4 is equal to e upon square root of 2. नेक्स्ट आपको क्या क्या डिफरेंशिएशन चाहिए, f 2 टाइम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x and 1 टाइम डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू y is equal to del over del y into f2 time differentiation with respect to x, that is del over del y e raised to power x cos of y, that is negative e raised to power x sine of y. This implies
f 2 times x 1 time y differentiation x y, that is 1, and pi upon 4 is equal to negative e raised to power 1 sine pi upon 4. This implies f 2 times x 2 times x and 1 time y, 1 pi upon 4 is equal to negative e upon square root of 2. ये आपका बन गया. एंड लास्ट डेरिवेटिव, आपको लास्ट डेरिवेटिव की जरूरत है. एंड लास्ट f 1 time x and 2 time y xy, that is del over del x into f 2 time with respect to y, putting the value of 2 time y. 2 time y is 2 time y. 2 time y is negative e raised to power x cos y. Negative e raised to power x cos of y. This will be negative e raised to power x cos of y. And so f 1 time x 2 time y at 1 pi upon 4 negative e raised to power n cos pi upon 4. This implies f x 2 time y at 1 pi upon 4 will be minus e upon square root of 2. Hence, the Taylor series of f of x y about the point 1 pi upon 4 is f of x y is equal to f of 1 pi upon 4 plus 1 upon factorial 1 x minus 1 fx 1 pi upon 4 plus y minus pi upon 4 fy 1 pi upon 4. Next term 1 upon factorial 2 x minus 1 का whole square x minus 1 का whole square f2 time x 1 pi upon 4 plus 2 x minus 1 y minus pi upon 4 f x y 1 pi upon 4 plus y minus pi upon 4 का whole square into f double y 1 pi upon 4 plus third term 1 upon factorial 3 x minus 1 की whole cube f 3 time x at 1 pi upon 4 plus x minus 1 का whole square y minus pi upon 4 f2 time x 1 time y at 1 pi upon 4 plus 3 x minus 1 y minus pi upon 4 raised to power 2 f 1 time x 2 time y at 1
pi upon 4, and last one is y minus pi upon 4 raised to power 3 f 3 times y at 1 pi upon 4 plus and so on. Now putting the all values, derivatives and all other values, this implies f of xy is equal to e upon square root of 2 plus 1 upon factorial of 1 with bracket negative e upon square root of 2 x minus 1 plus y minus pi upon 4 into negative e upon square root of 2 plus 1 upon factorial of 2 x minus 1 का whole square into e upon square root of 2 plus 2x minus 1 y minus pi upon 4 into f of xy. f of xy is f of xy is f of xy is negative e upon square root of 2 negative e upon square root of 2 plus y minus pi upon 4 का whole square f2 time y. f2 time y is negative e upon square root of 2 negative e upon square root of 2. Now last third term 1 upon factorial 3 x minus 1t whole cube f3 times x. f3 times x is f3 times x is e upon square root 2 plus 3 x minus 1 का whole square y minus pi upon 4 f2 times x 1 time y 2 times x 1 time y that is negative e upon square root of 2 plus 3 x minus 1 y minus pi upon 4 का whole square that is fx 2 times y x 2 times y that is negative e upon square root of 2 negative e upon square root of 2 and last term will be y minus pi upon 4 raised to power 3 into f 3 times x 3 times x 3 times x is e upon square root of 2 3 times y e upon square root of 2 with negative sign or it can be rewrite or you can given that f of x y is equal to f of x y is equal to e upon square root of 2 that is 1 plus 1 upon factorial 1
x minus 1 plus x minus 1 minus y minus pi upon 4. This is our first term. And next, 1 upon factorial of 2 x minus 1 का whole square plus 2 minus 2x minus 1 y minus pi upon 4, right? And negative y minus pi upon 4 raised to power 2 with bracket close, and last term will be 1 upon factorial 3 x minus 1 की whole cube negative 3 x minus 1 का whole square y minus pi upon 4, and next 3 x minus 1 y minus pi upon 4 का whole square, right? And plus y minus pi upon 4 raised to power 3. ये आपका फाइनल आंसर है. ओके स्टूडेंट्स, अच्छा क्वेश्चन था.